Sunny ma'am, we are live on YouTube, so you may start. Shall we start, Sanjeev ji? Yes, yes, ma'am. Very good evening to all of you, rather good afternoon to all of you. If there is some inconvenience, I'm sorry for that as I am traveling. So I welcome you all on today's webinar, rather Feminar, on the topic money management in the stock market. And we welcome our today's speakers here, Jyoti Sharma ji. Jyoti ji, we are really thankful for you for accepting our request and chosen such an interesting and dynamic topic, money management in the stock market. As we all know that we chartered accountants are very well versed in figures, and we are very trained in analyzing the financial statements. So I think all the chartered accountants, they can relate to this topic. All those who are working in this area, they must get top up to their information, and those who are new to this, those who want to start in the start to trade in the stock market, they'll definitely get benefited from this webinar. Jyoti ji, I'll give her brief introduction. Today's speaker, Jyoti Sharma ji, she started accounting in 2012. She in business advisory, direct and she is DISA qualified, and she is a qualified forensic auditor, and she is also certified concurrent auditor. She is very strong and genuine practitioner, and she has a passion for business growth and sustainability. And just want to mention that she is a partner of S. Sharma Company, and it is an all-women CA firm, and as per RBI Category 1 firm. Must congratulate Jyoti ji that as we are doing this seminar, especially for female chartered accountants, and to encourage them, source of motivation that all the female chartered accountants, you have all female partners in your firm. Thank you, Shalini ma'am. She is the member in our guest of honor when we have last year we have done the women conference. And welcome Jyoti ji, welcome to this seminar. And एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ये एक नया हम कह सकते हैं कि एवेन्यू भी कह सकते हैं, या एक एक्स्ट्रा हम इसमें ट्रेड करें, तो मुझे वो कोशिश करनी है चीज में, नए एरिया में एंड करने की। दो लाइनें याद आ रही हैं, कहते हैं कि ढूंढोगे अगर तो रास्ते मिलेंगे, ढूंढोगे अगर तो रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। तो नए नए रास्ते हमें ढूंढने हैं, और आज ज्योति जी वो रास्ता ढूंढने के लिए हमारा माध्यम बनेंगी। वेलकम ज्योति जी, ओवर टू यू। Thank you, Shalini ma'am. Thank you so much for such a generous introduction. I'd say कि इतना तो कुछ भी नहीं है, but आपने बहुत ज्यादा बोला. So really नहीं, thankful to you. नहीं, I'm always thankful to you. It is because of you only I'm here. It is because of you only I attended that seminar. And ये आप ही का initiative है जिसकी वजह से मुझे ये direction और ये platform और opportunity मिली है. So I'm really thankful and grateful to you. We are other. So should we start with it? Yes. Okay. So I'll start with screen sharing. और इसमें question answers के लिए भी हमारा provision रहेगा ना मैम? Yes. So my screen is visible to all? Yes, ma'am, perfectly. Okay. So देखिए टॉपिक तो बहुत ही जनरल टॉपिक है, बहुत कॉमन टॉपिक है. I mean we have been hearing about it from long back. बहुत ही
experts. There have been many great expert videos available on YouTube. Sabka apna viewpoint hai, everybody has their own vision, and they are, I mean, doing a very good job in, I mean, we have our fraternity people only, I mean, who are there to guide on YouTube, और बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से उन्होंने स्टॉक मार्केट पे वीडियोस बनाई है. बट समवेयर व्हाट आई फील, जो मुझे कमी हमेशा फील हुई है, बीइंग अ फीमेल, स्टॉक मार्केट से एक थोड़ा सा वो रहता है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक क्वेश्चन मार्क रहता है. हाउ विल बी एबल टू डू, because I don't know. Being a chartered accountant also, I'm really confident there are many women out there जिन्होंने स्टॉक मार्केट में नहीं कर रखी होगी इन्वेस्टमेंट. आई एम टॉकिंग दिस अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल दोज थिंग्स. डायरेक्ट मार्केट में आके इन्वेस्टमेंट करने वाली फीमेल्स आई डोंट थिंक सो ज्यादा होंगी. So today my agenda is, I mean, not to get into deep technicals. It's just I want to give a brief overview. एक वो confidence, एक वो थोड़ी सी understanding develop करना कि if anybody is planning at step 1 to start investing in directly shares, then she will be in a position to take the step 2. और अगर वो step 2 ले लेती हैं, आई थिंक आई बी सक्सेसफुल. कोई एक भी अगर इतना कॉन्फिडेंस ले पाएंगी कि वो सेकंड स्टेप पे जा पाए. सो Jyoti ma'am, our यस chairman सर. and NIRC, Sri Gaurav Gavdi with us. हेलो सर. Welcome, sir. नमस्कार. Hello, Jyoti ji. Very good afternoon to you, and I'm very happy to see that for the second time we have got a session on the stock market under the Feminar series. Oh, great. Earlier also, one female speaker, Achal ji from Jalandhar, she joined us and she spoke on stock market. So I feel it's really great to see that not only the women's are house makers now, but they are also the market makers. And probably that is the reason that the stock market, from 20,000 to nearly 21,000, the NSE, the Nifty touched in less than a month. So I'm sure with all the females investing, not investing in mobile or gold jewelry, they have started investing in stock market. So we have good days ahead. Nifty has got good days ahead. Thank you, ma'am. Very warm welcome from Team NIRC, and thank you to Shalini ji for moderating this session. And over to you now, ma'am. Thank you. Please continue. Thank you. Thank you so much. Thank you, Gaurav. Hello, Shalini ji. Okay, Jyoti ji, please continue. Yes. सर एक्चुअली आई बिलीव अब वुमेन स्टॉक मार्केट में गोल्ड ही लेंगी, वो भी सॉवरेन बॉन्ड्स ही लेंगी और डीमैट फॉर्म में ही रखेंगी. सो let us come back to our slides. Are they visible? Not no, ma'am. Just a second. Yes. Now? Now perfect, ma'am. Okay. So, and again, my purpose today, objective remains the same. I want at least a single, even if a single female CA starts investing in stocks from today onwards, I'll be successful today. So let's start this journey. My goal, let's start working towards my goal. So investment in stock markets can be a rewarding, but yes, it's a very complex process. It is not very simple. It's not like FDs that you are stated a certain figure that you will be rewarded this much every month, every year, and it will be compounded. No, it is not like that. There are fluctuations, and that is why it's not as simple as that. But again, it is not that difficult because CAs are very well equipped to analyze the financial statements. We CAs are already having an edge over others. I mean, my clients, people come to us to seek financial information about the companies. They request me to at least just look at the reports of the company, balance sheets, to give me
to give them a basic analysis as to how healthy is a company in terms of finances. So we are the best judge to assess the health of the financial health of the companies, and we only provide insights and investment decisions. So why don't we start getting rewarded for what knowledge we already possess? So let's start investing ourselves for us only. Okay, so for that, I mean, I'll not. I'll keep my things very short to the point, crisp. So the first thing which comes to mind whenever we start into market investments, how to choose a stock. The first and the last question remains the same. So choosing a stock is not that simple. There are so many factors involved. So I'll just give you a brief of what basic things, if you are able to understand, then you will be in a better position to select a stock. And probably it will be a successful stock and it will be a good investment. It will prove to be a good investment. So for that, you need to just understand the basics of stock market. That includes how it works, what kind of stocks are there, and what factors influence the stock prices. I mean, why is some stocks are soaring and some stocks are so bearish, they have not improved over the years? There are many factors to it. So we need to understand all these factors. Then we need to start reading the financial ratios, the whatever market indicators they are, and the, of course, financial statements of a company. They are everything. Then these days there are so many good apps available. I mean, Zerodha, Grow. I mean, investment is very, very easy these days. It is so much simplified. Opening a demat account is very, very simple. When we invest in those securities, we get associated with fund managers and everything. See, if you open a demat account with for example, I'm opening my demat account with SBI Securities. They give you that app, and app has a lot of features. So first and foremost, go and explore that app. There are so many information available over there regarding each and every stock. They have their own recommendations also. They have their analysis, SWOT analysis. They'll show you trends, ratios, what are momentum scores, and so lot of information. I understand it is not easy to understand everything on the first go, but again, if you start with it slowly, gradually, it will make sense to you, and you'll be able to understand, I mean, how to connect the dots. You'll be able to understand how things go, how things are working in stock market. So for analysis of a stock, there are basically three types of analysis. First is economic, then we have a fundamental analysis, then we have a technical analysis. Technicals I'll be explaining in the end. Then the last, fundamental is very important, in which we have quantitative and qualitative analysis also, and then we have economic factors also. Let's get to first fundamental analysis. So fundamental analysis is a method used to identify the true value of a stock. Every stock is not uh, every stock is not traded at their actual value. It might be undervalued, it might be overvalued. So we have to analyze those things also. Fundamental analysis helps us to study the health of a company, and thus we can get to know the actual value of the company. होता क्या है ना, कई stocks ट्रेडिंग बहुत हाई पे चल रहे हैं, बट एक्चुअल में इफ यू गो टू चेक दी स्टैटिस्टिक्स, आपको पता लगेगा कंपनी का उतना रेवेन्यू भी नहीं है, उतनी एसेट क्वालिटी भी अच्छा नहीं है. देन व्हाई इट इज? ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आ रही है, सभी चीजें आती है. वी हैव टू हैव लुक एट दैट. These are done by using, there are very qualitative and quantitative factors हम यूज करते हैं to analysis, to have a brief analysis कि ये stock अपनी मार्केट वैल्यू से अगर नीचे है, आई मीन if the value of the stock is still undervalued, then it is a potential buyer. If you invest in those stocks, definitely on a long term you will be profitable, you will be earning. So the main purpose हमारा fundamental analysis में, we do fundamental analysis in order to, because हमारी long term strategy अगर हम लेके चलेंगे तो fundamentally strong share होगा, then you will be always in a win-win position. Then we have economic analysis. Economic factors play a very big role.
हाउ कितना भी हम उसको अंडर वैल्यू करके चले, बट इकोनॉमिक एनालिसिस इज नॉट टू बी ओवरलुक्ड. अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए स्टेट्स में, मेजोरिटी में बीजेपी वॉन, सो दैट अगेन गॉट द स्टॉक मार्केट रैलिंग लाइक एनीथिंग. 20,000 से ऊपर जाके टच किया था मार्केट ने, निफ्टी ने. For what reason? Because people could see there is stability of government in this country. Our economic trends suggest that if we are, I mean, whatever decisions the government has taken in the past, they'll be carried forward. So a stable government gives a very big boost to economy. इकोनॉमी के ट्रेंड्स पॉजिटिव हैं तो इन्वेस्टर्स का मूड पॉजिटिव है. इन्वेस्टर्स का मूड पॉजिटिव है तो स्टॉक्स ऑटोमेटिकली सब पॉजिटिव में थे, सब ग्रीन में थे. एंड इफ यू नोटिस मेरी पूरी स्लाइड्स भी ग्रीन में है बिकॉज आई लाइक ग्रीन. आई डोंट वांट रेड. सो आई जस्ट वांट माय स्टॉक्स टू बी इन ग्रीन ओनली, बढ़ते चले. So economic analysis involves assessing or examining topics or issues from economics perspective. Say, if our country is economically growing, as we have said, we are moving towards a big trillion economy, five, and so on. So that is a big reason for us, for big reason to invest in Indian stocks, because they are having a good economic future. Also, economic analysis allows investors to analyze the market from, we can, yes, we can have a big picture, macro picture हम देख पाएंगे. Individually stocks को हम analysis नहीं कर रहे. Then by इसमें हमारे की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन से रहते हैं? इंडिसेस जो हमारा निफ्टी सेंसेक्स है. अब देखिए निफ्टी कितना राइज किया था अभी रिसेंटली. इट वाज जूमिंग आफ्टर द रिजल्ट्स, एंड कुछ सेलेक्टेड शेयर्स थे वो तो बहुत रैली किए थे. Then we have GDP, unemployment rate, suggestive measures होते हैं. Overall economic health हमारी economic analysis में आती है. So these factors do play कि shares ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं. Then we are again to fundamental analysis. अब देखिए fundamentally analysis करना है मुझे एक stock का, तो उसमें मैंने क्या चीजों को ध्यान रखना है. इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस में जो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, उसमें हमें आप कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए. यू हैव टू रीड, फाइंड अबाउट द कंपनी. आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, हार्ड अर्न मनी. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक how its management, who are its management, their experience and performance, how is their industry reputation, competition कितना है, किन किन शेयर से इनको competition मिल रहा है. So all these things get into us a brief picture कि टाटा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में वो 10 on 10 है. वी नो हाउ थिंग्स है. अभी टाटा का आईपीओ आया था. आई डोंट नो किसी को मिला है कि नहीं, बट आई थिंक दैट वाज so much sought for. Everybody applied for it, and a day before the result, everybody was doing puja and everything कि ठीक है अलॉट हो जाए शेयर. एंड इट हैपेंड. इट हैड बम्पर ओपनिंग. पूरी 100% का रिटर्न आया है उसमें, more than 100%. 500 का शेयर got listed around 1100 or 1200 something. That was zooming. Then it is also important to check the quantitative analysis also. I know ये सारी बेसिक सी चीजें हैं, ये एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें पता होती है, बट एज अ इन्वेस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पता तो है, बट ये क्या हम करते हैं? दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू टू गो इनटू दीज फंडामेंटल एनालिसिस. बिकॉज अगर आप ये सारी चीजें नहीं चेक करेंगे तो आई थिंक यू आर सेलेक्टिंग रॉन्ग स्टॉक. और ये आपकी, there is no backing of, there is no understanding of a company before you are investing. You are just investing through a recommendation or somebody said या वो कोई ले रहा है तो आप इसलिए ले रहे हो. वो नहीं करना. हमने हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी देखना है, जिसमें हमारी कंपनी के रेवेन्यूज आते हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स कितने हैं, हाई प्रॉफिट मार्जिन्स हैं कि नहीं, कैश फ्लो रिच कंपनी है कि नहीं, हाउ मच इज द रिटर्न ऑन इक्विटी, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल कितना है. All these things we have to check before selecting any stock. These are some financial ratios which are basically very very basic ratios. आप एटलीस्ट ये रेशियोज तो देखिए किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करने से पहले. फॉर एग्जांपल पीई रेशियो बहुत ही ज्यादा वाइडली डिस्कस्ड शेयर है. प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसमें देन यू हैव इन दिस
price per share is to be calculated with earnings. So basically, how much I am earning against the price is very important. For that, we have to compare it. Price to book value also. Books के हिसाब से कितनी value बन रहा है, and then how it is appearing. Return on equity. तो फेवरेट शेयर है हम सबका रिटर्न ऑन इक्विटी. एग्जैक्टली हमें रिटर्न कितनी आ रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन वी हैव डेट टू इक्विटी रेशियो. Debt equity ratio, I think, is very, very important, and we should sincerely check this ratio, because आपका risk aversion attitude क्या रहेगा वो यहाँ से भी पता लगेगा. How much you are willing to take the risk. Higher the debt, you know how things are. Low debt company, how safe they are. So all these things you have to take care. And current ratio. This will give you a brief understanding of the how much cash rich a company is, about the liquidity. So these are basic ratios. At least ये आप देखिए, study करिए, then you select any stock. These are very, very basic things. Okay, then we have to come to technical analysis. So what is happening? I believe nobody is doing technical analysis because we are somewhere, we have some fears or what, we are not comfortable with it, or we think we are not statisticians. That is the reason we are not getting into technical analysis. But trust me, once you will be able to understand these charts, nothing like that. So easy, so simple. There are so many people in stock market, I mean, who don't even understand the fundamentals of any stock, but yes, they are investing via these technical analysis. They are technical experts via analyzing and understanding the trends, the charts, studying these charts, seeing the past performance. They'll tell you a safe range in which a share will move, and there they make their money. It is so simple like that. So don't stay away from these technical analysis. Once you start understanding this technical analysis, you will realize nothing like that. So in technical analysis, so let's try to understand what basic we need to check in for a technicality of a stock. I mean, start reading the charts. How technical analysis to be done? It focuses on stock market rather than company. So in stock market, we have numbers. Numbers are moving. We have to have the analysis of those numbers. How they are moving, how they are, what is their intensity. So all those factors, different relative factors basically. तो स्टॉक मार्केट चार्ट्स देखना अगर हम सीख जाएंगे तो मुझे लगता है जो 50% प्रॉब्लम है सीए की वो खत्म हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट विल बी अनदर 50% easier. So basically it will be 100% easier for us. देखिए प्राइस मूवमेंट्स हमें जो टेक्निकल चार्ट्स होते हैं वहाँ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस मूवमेंट्स कैसे चलेंगी. हिस्टोरिकल डेटा होता है, उसी के बेसिस पे बेसिकली हम देखते हैं. देखिए the underlying idea is that market price already reflects the fundamentals of any given stock, which therefore can be ignored. So it is a good idea for investors to leverage both technical and fundamental analysis to fill the gaps. तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस समझ जाएंगे तो उसका एक अलग ही वो है. इसमें हमारे देखिए वो आते हैं बेसिक टर्म्स. हम टेक्निकल में देखिए लाइन चार्ट होता है, देयर आर प्राइस चार्ट्स. अब ये लाइन चार्ट अगर आप इसको देख पा रहे हैं, 27 जनवरी 3-10-17 डेट्स है नीचे, ये अमाउंट्स है आपके. यहाँ पे आप देखिए उसकी मूवमेंट आप देख पाएंगे. इधर ये ट्रेंड्स, आपको ट्रेंड्स का आइडिया लगेगा. तो स्टॉक मैक्सिमम कब हिट हुआ, लोएस्ट बॉटम कब टच किया उसने, और उसकी मूवमेंट ओवर द पीरियड कितनी स्टेडी है, हाउ डीप आर फ्लक्चुएशंस, and how it is trending upwards or downwards. So it plots the closing price of a share each trading day over a period. Every day का closing price देके आपको ups and downs, जिसमें the line formed by joining the dots plotted on the graph shows the movement. अगर मैं राइट इसके साथ मैं ऊपर सबके टॉप्स को मैच करूंगी तो एक मेरी ट्रेंड लाइन आ जाएगी, मूवमेंट पता लगेगी मुझे कैसे है. Then we have bar charts also. In these we are given ओपन कितने पे हुआ शेयर, हाई कितना टच किया, लो कितना टच किया, और क्लोज कहाँ पे हुआ. इससे मुझे उसका वेरिएंस दिखता है कि कितना वेरी कर रहा है स्टॉक.
रेड में क्लोज हुआ, रेड में ओपन हुआ, ग्रीन में क्लोज हुआ। देखिए, इट प्लॉट्स द इंट्राडे हाई एंड लो प्राइसेस ऑफ स्टॉक यूजिंग अ बार। प्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है, आप उसको चार्ट्स में दिखा दें, ऐसे दिखा दें, एज सिंपल एज दैट। इट्स जस्ट गिविंग यू अनदर प्रेजेंटेशन कि हमारे स्टॉक्स की मूवमेंट कैसे रहती है। देन there are some basic terms which we use in the study of price charts. Support level क्या होता है? एक शेयर का लेवल below which the price will likely not fall, इससे नीचे नहीं जाएगा जहाँ पे। रेजिस्टेंस लेवल, लेवल above which the price will not likely rise, इससे ऊपर नहीं जा रहा, बार बार वहां से नीचे आ रहा है, इसका मतलब तो उसका रेजिस्टेंस लेवल। ब्रेकआउट, when a stock rises above its resistance level or falls below the support level, सपोर्ट लेवल तोड़ दे या रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर चला जाए, तो इन दोज केसेस वी से कि स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। देन वी हैव ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन इज बेसिकली जो हमने ये चार्ट्स हैं, इसको अगर हम इसको एक इसके साथ एक लाइन बना दें तो हमें ट्रेंड्स पता लग जाते हैं। सो अपवर्ड ट्रेंड एंड हाउ इट इज ट्रेंडिंग, रिलेटिव स्ट्रेंथ, अगेन वो भी एनालिसिस आपको दिखेंगे उसमें, जहां पे वो कहते हैं कि परसेंटेज प्राइस चेंज ऑफ अ स्टॉक टू द सेंसेक्स, सेंसेक्स के साथ वो कितना उसका परसेंटेज रिएक्शन आ रहा है, या फिर किसी पीयर स्टॉक के साथ आ रहा है तो वो कितना रिएक्ट कर रहा है। ये सब चीजें हमारी बहुत बेसिक टेक्निकल स्टडी में आती हैं। इफ आई, आप देखिए ना, इफ आई गो एंड ट्राई टू बाय एनी स्टॉक, मैं पहले उसका चार्ट जरूर चेक करूंगी कि ये आज अपने ओपन कितने पे हुआ, आज ये अभी हाई पे चल रहा है, लो पे चल रहा है। बाइंग पोजीशन कब क्रिएट करूंगी? जब वो लो पे होगा। बाय ऑन डिप्स, जब एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। हाई चल रहा है आज प्राइस और 52 वीक हाई चल रहा है, या फिर विद इन अ वीक उसका हाईएस्ट चल रहा है, तो आई विल स्टिल वेट, आई विल कंसिडर अदर फैक्टर्स की न्यूज है कुछ मार्केट में अभी और इसकी बढ़ने की संभावना है कि नहीं है, और आई शुड बी बाइंग इट एट दिस इज द राइट पॉइंट टू बाय, और आई शुड वेट कि इट इज जस्ट अ फ्लक्चुएशन एंड देन आई विल बी गेटिंग अ dip where I will be given an opportunity to buy. So all these things we can analyze from our technical charts, and technical charts are available on each and every app. आप किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करेंगे तो वहां पे वो चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। देयर यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। सो आई डिस्कस्ड विद यू वेरी सिंपल, सिंपली आप लाइन चार्ट एक देखिए, उसका ओपन कितने पे रहा, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, वो सब चीजें बेसिक सी आप उसको अंडरस्टैंड करिए। देन आई हैव गॉट दिस 5 steps अप्रोच फॉर ग्रेट स्टॉक पिकिंग। दीज आर स्टॉक जब हम परचेज कर रहे हैं, डोंट लुक इट एज अ आइटम और समथिंग, think like you're investing in their business, then you will make a good decision कि yes, ये stock मेरे को suit करता है, this business idea I can relate to, I understand renewable energy is a future, I'll be investing here। IREDA का भी stock IPO की bumper listing हुई, that was the reason, it is giving loans, it is basically an NBFC funding to people in the renewable sector only। So green energy है, हॉट टॉपिक है, दिख रहा है, फ्यूचरिस्टिक है, आई विल इन्वेस्ट। देन वी नीड टू वैल्यूएट द ट्रू वर्थ ऑफ द बिजनेस कंसिडरिंग द फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल। एग्जैक्टली, if I can see a company is investing a lot of money in their business, they have futuristic approach, तो उनका ग्रोथ पोटेंशियल है तो डेफिनेटली आई विल बी इन्वेस्टिंग इन देम। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, द रियल रिस्क कंटेनमेंट मेजर। देखिए, when we invest in stock market, it is very important to have your range, the upper range at which you'll sell, the lower range at which you'll sell again. Lower range I'll sell when I have to book the losses. Upper range I'll sell to book the profits. The major problem is upper range तो दिख जाती है कि चलो इतना रिटर्न आ गया, बेच लो। लोअर रेंज समझ नहीं आती, एंड देयर आर लॉसेस, वी आर टू ऑप्टिमिस्टिक, हमें उम्मीद रहती है कि बढ़ जाएगा, इट विल बाउंस बैक, मेरे लॉसेस कम हो जाएंगे। बट ऑन दो सिचुएशन नॉर्मली व्हाट हैपेंस, लॉसेस बुक नहीं किए एंड इट फर्दर
drags down. That creates problem, and that creates a mental loss as well कि ये तो out of range नुकसान हो गया. So you need to understand how important to have your stop loss. आप अपनी range decide करके चलें कि ये share इससे नीचे जाएगा, I'll sell. और profits भी मैंने कहाँ पे इसके बुक करने हैं, दोनों important होते हैं. डू नॉट डिपेंड ऑन अ टर्न अराउंड. हाँ, ये सब उम्मीदें मत रखिए कि आज शेयर टूट रहा है, कुछ है तो कुछ अचानक से there will be some magic which will happen and the share will bounce back like anything. Nothing happens like that. Potential है तो it will also take a good amount of time. Years लग जाते हैं तो उसमें कुछ होगा. अचानक से turn around kind of thing doesn't happen in stock market. And invest, always invest for the long term to generate inflation adjusted superior returns. Why do we invest in stock market? I have multiple reasons. Inflation को contain कर रहे हैं. I expect higher returns. All these factors. But first you analyze how much is inflation happening in our country. Then what is your expected return from them? And then analyze, are you getting that much of return at least? That is the purpose of investing, ना? To get at least superior returns. अगर वो सब नहीं करना था, inflation को bypass नहीं करना, तो better invest in FDs. पता है you'll be getting 6-7%. There we are already having safe investment जहाँ sure returns आ जाता है बगैर सोचे समझे. Then we have mutual funds also जिसमें हमारा 10, 12, 15 की रेंज में गुड परफॉर्मिंग जो फंड्स होते हैं वो दे देते हैं. That is also fine. If you are expecting to generate more than those returns, then have a long term strategy. Invest for long terms. Okay, we need to have a long term approach to be successful in the stock market. Short term approach is never advisable. It will lead you to losses only. And there are, I mean, I am against short term approaches. Stay here for long term. You'll be benefited like anything. So, I mean, this was all technical things that was quite boring, I know. I mean, but होता क्या है ना, वो बेसिक्स तो आपको जानने ही चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक मार्केट. अगर आपको ABCD नहीं पता है ना, तो यू विल बी लाइक आउट ऑफ साइट एंड माइंड एवरीथिंग. आप कुछ समझ नहीं पाएंगे. सो एटलीस्ट दोज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. बेसिक टेक्निकल्स आपको समझ आनी चाहिए, बेसिक रीडिंग आनी चाहिए स्टॉक्स की. देन ओनली यू शुड इन्वेस्ट. Now, how to be a successful investor, which is basically जो हम सबको चाहिए. क्योंकि okay, I have got two questions. What should be ideal range of period for looking the bar chart? So, Ekansh Agarwal ji, what is the long term? देखिए, getting back to your question number one, what should be ideal range period for looking? देखिए, मैं तो जब analysis देखती हूँ तो आई लुक फॉर बिगिनिंग टिल एंड. मैं तो सभी देख लेती हूँ और रीजंस भी चेकआउट करती हूँ कि उस समय वो अप्स एंड डाउन्स उसमें क्यों आए थे, स्टेबिलिटी कब से आई है. आई लुक फॉर दैट. इफ अ शेयर इज स्टेबल for only which has been got stable only last 2-3 months and it has been so fluctuating in the past, so again that is a risky share. So ideal range ऐसा कुछ नहीं है, बट आप मिनिमम 1 से 3 साल का तो देखिए कि उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा, हाउ सस्टेनेबल इट हैज बीन. एंड लॉन्ग टर्म तो देखिए जिसका मिनिमम एज पर इनकम टैक्स 1 साल से तो ज्यादा रखेंगे तो ही लॉन्ग टर्म है. तो 1 साल का टारगेट तो मिनिमम आप लेके चलिए शेयर का. उसके बाद इफ यू फील नाउ दिस शेयर हैज कम टू अ पॉइंट जहाँ पे मेरे रिटर्न्स आ गई हैं, आई हैव गॉट गुड रिटर्न्स 25, 30, 40 वॉट एवर, और यू एक्सपेक्ट कि मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग एनफ कि जिसकी वजह से इसमें हमें ग्रोथ एस्पेक्ट अभी बढ़ता दिख रहा है, so you can just sell and invest in another options. See, staying invested in any share, being over optimism is also not good. Better you sell it off and get into another boat. At least you are not missing the opportunities. So being loyal to any share is not a good idea. Be practical. So coming back to this, how to be successful investor, which is very important. So for this, first of all, I would advise if anybody is planning to start investment, start with small amounts. It could be anything
1 lakh minimum or 50,000 or whatever. Take it as your kitty that you have been given this much of money. Now you have to start playing with that money without worrying about whether it will be profitable or you'll be in losses. So stop those worries and start playing with that money. You select your favorite stocks, invest on them, make the proportions as per your choice, create your own portfolio. 10% or 30% in one, 20%, 20%, 15%, whatever. And create your portfolio with 5, 7 shares and you just watch them every day. Mind it, you have to watch your shares every day. Then only you will be able to understand their trends. It is very simple, only once in a day, or it will only take 5, 10 minutes of your every day that you will be checking the movement of your shares, because this habit needs to be built if you want to invest in share market. If you're not having that habit of checking your shares, then how will be a good investors? So every day, just devote, starting with 5, 10 minutes, check all your shares and read all related information and see how they're moving, how much fluctuations are there in a day, in a week, and in months. And over the period, you will check your portfolio, how much return are you generating. So try this hit and trial or kind of a test based portfolio to test your own investment skills. This is what I suggest to everyone. Just a so बहुत छोटा सा किटी स्टार्ट करिए, उससे आप समझ पाएंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है. क्लियरली डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल्स. वो जब आप ये टेस्ट फेज निकल जाएगा आपका, देन यू कैन डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल्स कि आप क्या चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म. आई ऑलवेज सजेस्ट कि medium to long term strategy is always good. Trading is also different aspect. उसके लिए you need to be sitting whole of the day and tracking each and every share for every slightest of movement. So they are all together different. Here I am just advising you how to select good stocks and you can have a good return out of it. That's it. Because we are CAs, we have our own works also. We have to remain invested in our jobs or practice or everything. So whole of the day, I cannot be sitting on the uh, computer or stock market, not checking how much there is fluctuation and movement. So that is the reason. Now again, your investment strategy, you have to design your investment strategy and your risk tolerance. You have to identify your risk tolerance, how much risk aversion you are having, or how risk friendly you are, basically. What kind of an investor you are, and what is your time horizon. I mean, after what period you want to reap the benefits, or you want to sell, liquidate your money, or you want liquidity in your hand by selling these stocks. So assess your risk tolerance before making any kind of investment decision. Okay, conservative investors are also there and risk friendly are also there. So you decide what kind of investor you are. बजट बना के चलिए. डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है कि कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. आई बिलीव स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप उसी की करिए जो आपका एक्स्ट्रा मनी है, विच यू डोंट रिक्वायर एनी नियर फ्यूचर. बिकॉज अगर आप अपने ज़रूरत का मनी, जो भी आपके डे टू डे एक्सपेंसेस, या फिर 1 साल के बाद आपको कहीं ज़रूरत होगी जिसकी, उस पैसे को अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, देन डोंट डू इट. आपके डिसीजंस अच्छे ना जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. Because then your psychology will be working like that ki I have this time frame, I need to get returns within this time frame, which may happen and which might not happen. So don't invest those money which will give you a financial burden. And possible हो सकता है तो contribute कर लीजिए regular investments. जैसे जैसे surplus आप generate करते हैं अपनी income से, अपनी practice से, या जो पैसा आपको लगता है कि I just don't need it over गुड अमाउंट ऑफ टाइम, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी को इन्वेस्ट करना हो, सो दैट हमारी टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट चले एंड वी कैन
make good investment decisions और benefits भी हैं. देन एक इमरजेंसी फंड तो बना के ही चलिएगा स्टॉक मार्केट में आने से पहले. ऐसा ना हो कि स्टॉक मार्केट में जो लगाया वो सारा जीरो हो जाए एंड देन यू आर वरिड एंड अगेन एक्स्ट्रा पैसा वो लगाएंगे, तो ये ऐसी वाली सिचुएशन नहीं है. सो इन्वेस्ट योर कीप योर इमरजेंसी फंड सेपरेट एंड देन दिस. इवन आई बिलीव एट टाइम्स आपको इन्वेस्टमेंट, आप अपना इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बनाना चाहिए जिसमें उसको सिलेक्ट करना चाहिए अपनी बास्केट में कि कितना एफडी में कर रखा है, म्यूचुअल फंड्स में इफ यू आर इंटरेस्टेड उसमें कितना कर रखा है, सिप में कितना ले रखा है, एंड देन डायरेक्ट स्टॉक्स में कितना कर रखा है. आई डोंट गो फॉर सिप और म्यूचुअल फंड्स बिकॉज आई बिलीव we have basic understanding of the stocks. So why not directly select your stocks and get the return yourself? I am not willing to pay to the portfolio managers basically. So वो आप अपना, I mean, so keep your portfolio like this. Average out आपका return हमेशा अच्छा रहेगा. ये मेरा assurance है. And then position sizing. देखिए ज्यादा रेलेवेंट तो उन लोगों के लिए होते हैं जो डेली पोजीशन क्रिएट करते हैं, बट सिंस हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म अप्रोच, तो आपको अपना ईच पोजीशन का अपना पोर्टफोलियो में देखना पड़ेगा कि ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हैं. किसी एक स्टॉक में पर्टिकुलरली ज्यादा मत डालिए बिकॉज दिस हैज हैपेंड विद मी सो मेनी टाइम्स. Share market fluctuating, and the stock which was not performing since last 2-3 months, it started performing again one day. उसने return दे दिया 20% and rest of the stocks which are performing average 2 to 3% good, they're all down today. But summing up, average out return वहीं घूम फिर के आ जाता है, एक average decent return निकल के आ जाता है. So diversifying position sizing is very important. किस स्टॉक में कितना अमाउंट लगाना है ये भी सोच समझ के लगाइएगा. स्टॉप लॉस ऑर्डर्स वहां लगा के चलिए. डेफिनेटली जो कोई स्टॉक अगर बहुत ज्यादा क्रैश हो गया, समथिंग हैज हैपेंड, सम बैड न्यूज हैज हैपेंड रिसेंटली अदानी स्टॉक्स में, when we got those Hindenburg reports and everything, every stock crashed like anything. Some people sought that as an opportunity also. जब उसका low आए थे, dips आए थे, people bought that also. And if I tell you a recent example है अभी election से पहले, there was a share of Adani, I'll not name, that was trading around 600 or 700, and now it is about 1200. So how this happened? It doesn't happen because BJP won. It happened because there was another report which was released by the US, which gave a clean chit to the company, and also the Supreme Court decision also came in its favor. So that is how that stock rallied so much. So people who bought at that time at the low time were profited like anything. So that is how, I mean, things change so instantly that we sometimes don't understand how things started moving so quickly. Start small and avoid, yes, in stock market it is very important to avoid emotional decision making. कभी भी परेशानी में है, मूड ठीक नहीं है, गुस्सा आ रहा है, लड़ाई की है, तो प्लीज स्टॉक मार्केट से दूर रहना. फिर नुकसान हो जाएंगे तो बाद में पछताओगे. एंड बीइंग अ बिगिनर, एज आई सेड, 1 साल का तो एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद ही आप सोचेगा कि मैं स्टॉक मार्केट अब मुझे थोड़ी बहुत आती है, आई एम इन अ पोजीशन कि मैं अपना पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करूं. इनिशियली तो स्मॉलेस्ट ऑफ अमाउंट से आप लीजिए, उसी को प्ले अराउंड करिए, पूरे साल उसमें एक्सपीरियंस लीजिए, देन you can think, and that will also teach you the emotional reactions also, कि you don't invest when you are terrified by the fluctuations, whether it is low or up. कोई स्टॉक बहुत ज्यादा रैली कर रहा है तो तब भी नहीं, चेक फॉर कि इज इट गुड टाइम, इट इज देयर पॉसिबिलिटी कि आगे भी और बढ़ेगा कि नहीं, तब उसको लीजिए. या लो पे है तो उसकी भी कैलकुलेशन करिए कि इससे भी नीचे जाएगा क्या. ऑल दीज थिंग्स विद अ रैशनल माइंड, विद अ काम माइंड. अगर इमोशनल डिसीजंस लिए तो फिर गॉड विल टेक केयर ऑफ यू. देन डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. There has been always made huge I mean
reference to this point that we should diversify your portfolio, never put everything in one basket, because not even in the same industry. I'll always suggest you go for different sectors and different industry, because at some point some industry is performing well, at some point other is performing well. All in all, average you will get a good return. But if you are restricted to, or you have a close connection with some industry and you're restricting yourself to that, that might not be that helpful in future. So be aware of all those things. And we have diversification in terms of classes also, industries and geographic regions also. So there can be diversification in any way, but you have to diversify your portfolio. So diversification basically helps us spread the risk and reduces the impact of poor performance in a single investment. Okay, in your portfolio, definitely there will be some stocks which will be your star performers, and some will be like your poorest of performers, some will be average. But all in all, summing up, they all of them will give you a decent return. That's how we diversify a portfolio. Stay informed. First of all, I think to be a good investor, start changing your habits, start reading as much as you can. Because if you are not keeping up with the financial news, company announcements, and market trends, you can nowhere be a good investor. In order to be a successful one, you have to read. If you're not informed, how will you react to those news? And you will be definitely losing opportunity of monetizing all those good news, as well as getting saved from those bad news. If I have got some news about any company on Saturday, Sunday, I am expecting on Monday how market will be reacting. So if you are keeping yourself informed to all those things, then only you can expect to be a good decision maker in this field especially. Of course, we need to have a long-term perspective. Otherwise, there is no, I mean, for me as a woman and other women here, I mean, it is very difficult in initially to have these, to, I mean, able to see there are losses and we have lost our money and all those things. That is so discouraging. So better have a long-term perspective, keep patience, and when slowly and steadily you'll see you are getting good returns, that this will give you good confidence boost to you, and you'll be able to understand how things are, how your patience has paid to you. And then important, it is very important, monitor you have to regularly check your investments, how they are moving. Is any day can be a good day to buy, any day could be a good day to sell. So you have to keep watching your shares every day to understand what, identify those good days and bad days for buying and selling. And also you have to learn from mistakes. When you will be start investing, बहुत गलतियां होंगी, बट उनको समझते समझते आगे बढ़ते जाना है, then only ठीक है, थोड़े बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे. कंटिन्यू लर्निंग. देखिए स्टॉक मार्केट इज सो डायनेमिक, एंड अपकमिंग फ्यूचर में स्टॉक मार्केट का इतना ज्यादा रिलेवेंस होगा दैट आई कैन नॉट tell you. I mean, everybody, even young kids, are also investing in this market like anything. I've seen IT people, they are investing using this Grow, Zero the app, and all these things, and they are quickly investing and making money. So we, being chartered accountant, who are already having a background of all these things, who are already having resources, we have so much knowledge and everything. At least start making money for yourself who has not yet started, and then you will be definitely suggesting to other people also. That could be your own family or your clients, of course. So educate yourselves, keep on learning, keep on reading, start I mean, being proactive. And basically I just want to, there is no see, there is no guarantee you will be getting this much of profits or not, but if you follow certain principles, you remain calm, consistent, informed, you study charts, you have a fundamental analysis, then you have a technical analysis, then there are very high chances that you will be successful in the stock market. And in the end, I just want to conclude by saying one thing. Stock market is not that difficult. Even I was not keen in investing stock market 5-6 years back, but
the moment you start reading, understanding, it is so habit forming that you'll every day open your laptops, log in your account, and every day you'll check the status of your shares, how much it is in plus, how much it is in minus, what is the news of the company. You'll deeply delve into it, and you will learn a lot of things from this. How industry is working, how economy is moving, how to what direction we as people are moving. So we'll be in a position to learn a lot of things. So CAs has to be very much updated with the market trends, regulation, and financial developments. We need to be a pro in these things, and the opportunities for us being chartered accountants is endless. Who will be investing in this stock market? If chartered accountants are not, then who will be investing? I mean, they are the doctors of the financial health and everything. They know each and everything about the companies. At least prima facie, they are able to read and assess and identify. So why not start making money for ourselves first, and always seek when you start investing, seek opinions, guidance from others also who are already doing, and stay away from short-term profits, daily daily tradings, because initially it is not good for us, because we are not able to devote that much of time, and that will for sure, that is more towards the gambling. So better not go towards that. Go towards a systematic investment, understanding the technicalities and fundamentals and everything, and see, you'll be able to see this stock market is working the way you are expecting. So that way you'll be a good portfolio manager. First become a good portfolio managers for yourself, and then you will be helping others as well. So if I think some people are having some questions. I'm done with my slides. So whatever questions are, I can just take up. I'll request everyone, whatever questions they can put up. So we have a question from Mr. Raj Gambhir. How can we understand and analyze the share chart green red candles? So दोनों particular techniques, you have to start checking previous trends, and what there is no such technicality involved in these green red candles. You have to see the high and low, opening and closing, all those things, and you will be able to understand how what is the momentum of your share, how much it is moving in which direction it is going. And then we have Mr. Anshul Arora. If prices of shares goes down, maybe it may increase after a few days. So how we conclude that we सर देखिए, अंशुल जी आप पहले ये देखिए ना कि डाउन किस वजह से आया है। ये जो फंडामेंटली कोई न्यूज है, क्या रीजन है और कितना डाउन है। 2-4% का डाउन तो फिर भी इतना कोई काउंटिंग में नहीं आता। 20% डाउन है, आज पेटीएम था 17% डाउन। उसके रीजन है ना, आपने न्यूज पढ़ी होगी तो आपको पता लग जाएगा कि इतने डाउन क्यों है और कितनी जल्दी ये उठेगा। जल्दी नहीं उठने वाला, इट विल टेक गुड टाइम। तो ये डाउन डाउन है, यहाँ पे बेच दो, और जिसने खरीदना है वो अभी पेटीएम स्टेज पे ले लो। दिस इज माय सजेशन। I think these were the only 5 questions. I am done with 5 questions, Shalini ma'am. If anybody is having any other question. थैंक यू सो मच ज्योति जी, आपने बहुत ही सिंपल और मैं कहती हूँ कि बिगिनर से लेके और उसको एक्सपर्टाइज कैसे करना है बहुत डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन दी है। और आप देखो गैदरिंग भी बहुत अच्छी थी, शुरू से एंड तक सब जुड़े रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि हाउ वेल यू हैव कन्वर्स्ड विद द ऑडियंस। थैंक यू। बहुत अच्छा। हाँ मैम किसी के भी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस लगा। आप बोल दीजिए, अगर है क्वेश्चंस तो आ जाए, नहीं तो फिर हम है ना उसको। किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप वो क्वेश्चन आंसर जो सेक्शन है उसमें अपने क्वेश्चन लिख सकते हो, या चैट बॉक्स में कोई कुछ पूछना चाहता है। मोहित गुप्ता जी इज आस्किंग व्हाट विल बी द निफ्टी नंबर बाय नेक्स्ट वीक। सर
ये कौन बताएगा आपको? ये तो कोई भी नहीं बता सकता। तो 21,000 तो आ ही गया है। नॉट टू वरी। पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम उनको अलाउ कर लेंगे, वो बात भी हाँ। कर सकते हैं। हाउ मच वी हैंड कैन रेज कर रिलाई। सकते हैं, किसी ने कुछ पूछना है तो उसको अलाउ कर देंगे। हाँ। हाउ मच वी कैन रिलाई ऑन जी बिजनेस। मैं तो कह रही हूँ किसी चैनल पे मत रिलाई करिए। आई डोंट रिलाई ऑन एनी चैनल। आप अपने ब्रेन पे रिलाई करिए, अपनी कैलकुलेशन चेक करिए। इफ यू आर सेटिस्फाइड, गो फॉर इट, नथिंग लाइक इट। और मुझे लगता है शेयर मार्केट में तो बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हम अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हैं चीजों को, तो हमें तो खुद की नॉलेज पे ही रिलाई करना चाहिए रादर रिलाइंग ऑन अदर्स परस्पेक्शंस। क्यों ज्योति मैम जी? एक्चुअली मैम एक्चुअली एक फेमिनिन पर्सपेक्टिव से बताऊं, देखिए हम फीमेल्स हैं। कितनी फीमेल्स होगी जिनको कुकिंग नहीं आती? नहीं आती ना, शुरू करते हैं ना, धीरे धीरे प्रो हो जाते हैं। ये भी उस बिल्कुल तरह से ही बिल्कुल है। आप बिल्कुल। शुरू करिए। शुरू में गड़बड़ होगी, इसलिए अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत छोटा रखिए, बट धीरे धीरे आप देखिएगा। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू हैव अ सच अ गुड एज ओवर अदर्स। आप बहुत जल्दी इसमें प्रो हो जाएंगे, और आप अपने ही आपने दिमाग से इन्वेस्टमेंट। आपने बड़ा अच्छा अपने लेक्चर में बताया कि 1 साल तक आप उसको ट्राई करो। गिव यस। यू अ ट्राई। 1 साल तो आप सीखोगे, फिर आप उसके बाद कुछ कह सकते हो कि इसमें कुछ अर्न करना है या किसी को कुछ सजेस्ट करना है। तो बड़ा ही एप्ट आपने बताया। 1 साल तक छोटी छोटी अमाउंट से आप पहले उसको सीखो, क्योंकि बड़ा ही वास्ट एरिया है इसको समझने में और मार्केट के ट्रेंड्स को समझने में। एक लाइटर साइड पे एक जोक है। एक बार भगवान जी की पूजा करी एक बंदे ने, बहुत ज्यादा, शंकर भगवान जी की। तो भगवान जी ने बोला कि क्या वरदान मांगते हो? तो उसने बोला बस आप मुझे एक दिन पहले बता दिया करो कि शेयर मार्केट अगले दिन कहाँ जाएगी। तो भगवान जी कहते हैं अगर मुझे इतना पता होता तो मैं यहाँ हिमालय में बैठा होता। ये तो मतलब ये तो भगवान को भी नहीं पता कि स्टॉक मार्केट का अगले दिन क्या रुख होने वाला है। तो ये तो हम इंडिविजुअल्स जब भी आप उसमें शुरू करोगे तो इट विल डेफिनेटली टेक टाइम टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट की क्या सिचुएशन रहने वाली है। बट मैम अभी है ना, क्योंकि हम हमारी ट्रेंड्स बदल रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। सब लोग अपना पैसा ऐसी जगह जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफडीज में कितना ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट रेट्स मिल रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे? अब जिस बैकग्राउंड नॉलेज हम रखते हैं, अगर उसी फील्ड में हम अपनी नॉलेज को यूज करते हैं, आने वाले समय में कह रही हूँ ना, छोटे छोटे बच्चे 18 ईयर्स 19 ईयर्स के बच्चे हैव सीन दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। आईटी प्रोफेशनल्स, उनका क्या बैकग्राउंड है फाइनेंस में, एंड दे आर डूइंग गुड। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत है आज की डेट में यस। ना। इंफॉर्मेशन बड़ी इजीली अवेलेबल है। आप स्टडी कर सकते हो किसी भी चीज को। डाटा किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडस्ट्री का डाटा आप लेना चाहते हो तो मतलब अगर कोई करने वाला हो, थोड़ी सी मेहनत करने वाला हो, टाइम इन्वेस्ट करने वाला हो, तो आप इसमें बड़े अच्छे से समझ सकते हो एक्चुअली इसको। एक्चुअली थोड़ा सा डेटा एनालिसिस जिसको आता है वो कर सकते हैं। वो टेक्निकल में जाके वो बच्चे कर लेते हैं ना, वो सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं और वो कहते हैं ले लो शेयर। बिल्कुल। चलो, थैंक यू ज्योति जी। बहुत थैंक अच्छे यू। से मुझे भी बहुत थैंक कुछ यू। समझ आया और डेफिनेटली मुझे अरे लगता है कल से मैं भी इन्वेस्ट करना शुरू करूंगी। चलो, और मेरा फिर गोल अचीव हुआ, एक ने तो हाँ करी। और फिर आपको परेशान भी करूंगी कुछ नहीं समझ आएगा तो पूछने के लिए। अरे एनी टाइम मैम, एनी टाइम, ऑलवेज फॉर यू, देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो मुझे लगता है और क्वेश्चन नहीं है। संजीव जी है, एक छोटा सा लेटर ऑफ अप्रिसिएशन है ज्योति जी के लिए, आपको हम बाद में भिजवा देंगे। अभी हम स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, Jyoti ji. Thanks for your giving out your precious time to us. This थैंक is यू। a small certificate of recognition. आपको बाद में हम हैंड ओवर करेंगे ये। अभी हम इस पे दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक And यू। thank you all the audience, patience audience, for your continuous presence. शुरू से एंड तक अटेंडेंस बढ़ती ही रही है। और थैंक यू वेरी मच हमारे इस इनिशिएटिव से सबको जुड़ने के लिए। और मैं चाहूंगी और भी जितनी भी फीमेल्स हैं जुड़ना चाहती हैं वो जरूर कांटेक्ट करें, चाहे एज अ मॉडरेटर या एज अ स्पीकर वो आना चाहते हैं। क्योंकि ये स्पेशल प्लेटफॉर्म ही इसीलिए बनाया गया है कि हम ज्यादा अगर नहीं ट्रेवल कर सकते जगह कहीं और जाके, तो एक वेबिनार पे हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके। मेरा फोन नंबर आप नोट कर सकते हो, 92163578
899 CA शालिनी गुप्ता। मैं रीजनल काउंसिल मेंबर हूँ, और कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आप मेरे से जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। चैट बॉक्स में भी डाल दिया मैम मैंने। हाँ ठीक है, चैट बॉक्स में भी मेरा नंबर आ गया। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक आई यू। वुड रिक्वेस्ट ऑल, शालिनी मैम को सब अप्रोच करिए बिकॉज शी इज सो जेनरस। वो सबको रिस्पॉन्ड करती है और सबके लिए अच्छा ध्यान रखती है। तो ये अपॉर्चुनिटी किसी को मिस नहीं करनी चाहिए। शालिनी मैम को जरूर कांटेक्ट करिएगा क्योंकि शी विल टेक केयर ऑफ यू लाइक एनीथिंग। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, सो ओके मैम, दोबारा नेक्स्ट नेक्स्ट फेमिनार में मिलते हैं। ओके श्योर जी। मैम, प्लीज। थैंक